Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My topic for today is nature, features or characteristics of principles of management. Previous video में हमने FIOL के principles किए थे. After understanding those principles, now you'll be able to identify what are the characteristics of these principles. Let's see the first point, universal applicability. Universal applicability point बोलता है that these principles are applicable to all the type of organizations. All the type of organization means whether the organization is big or large, business, non-business, social, political, government organizations, every type of organization, these principles are applicable. But the applicability depends upon the nature and size of organization. Extent of application depends upon two factors, nature and size of organization. Very good example, you have heard about FIOL's division of work. Division of work, क्या बोलता है प्रिंसिपल? काम का बंटवारा हमें करना है पर्सन्स की स्किल्स और एबिलिटी के हिसाब से. To what extent the work needs to be divided depends upon the size of organization, small or big. Although the principle is applicable in all the type of organization, but the extent of application depends upon the size of organization. Let's see the second point, general guidelines. This point says that these principles are only giving you the guidelines to take decisions in various problem solving situations. But these principles are not providing रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन. कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम का डायरेक्ट ये सोल्यूशन होगा. ये प्रिंसिपल्स इस तरीके की गाइडेंस नहीं दे रहे, सिर्फ एक आपको पेरिफेरी दे रहे हैं जिसके दरमियान रह कर के आपको डिसीजंस लेने हैं हर प्रॉब्लम सिचुएशन पे. सो द की वर्ड हियर विच इज हाईलाइटेड हियर दैट दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. क्या बोलता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल बोलता है एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी अवॉइडेड. हाउ एम्प्लॉय टर्नओवर कैन बी अवॉइडेड? अगर हर एम्प्लॉय को सफिशिएंट टाइम दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो बार बार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने वाली स्थिति ऑर्गेनाइजेशन में खत्म हो जाएगी. बट stability of tenure, how much time you have to give to the employee to prove himself in particular organization depends upon the type of organization. In some of the organization it can be 3 months, it's another organization it can be 6 months, in another organization it can be period of 1 year. So they are giving you the solution for a problem, but they are not providing you any ready-made straight jacket solution. They are just general guidelines that are giving you that how you have to take a decision in a particular situation. Third is formed by practice and experimentation. This point says that principles are evolutionary in nature. They have been evolved over a period of time. कैसे evolve किया इन्हें? Through observation, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स. ये पॉइंट बोलता है कि दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट. ओवरनाइट मीन्स रातों रात इन प्रिंसिपल्स को हमने नहीं बनाया है. मैनेजर्स ने सिचुएशंस को ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंट किया है और रिसर्च की है और एक्सपीरियंस किया है कि इन प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के बाद क्या क्या चेंजेस इवॉल्व हुए हैं. उसके बेसिस पर ये प्रिंसिपल्स फाइनलाइज किए गए हैं कि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किए जाएंगे. वेरी गुड एग्जांपल आई गिव यू, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. द मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स हैड ऑब्जर्व्ड दैट अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल इज क्रूशियल फॉर ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव नहीं कर सकती जब तक कि डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल न हो. चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद ही इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया. नेक्स्ट इज flexible.
this point says that these principles are not rigid. That means these principles can be modified as per the demand of situation. देखिए, मतलब कि हम इन प्रिंसिपल्स को ब्लाइंडली हर सिचुएशन में नहीं लगा सकते. सिचुएशन के हिसाब से हमें प्रिंसिपल को मॉडिफाई करना पड़ेगा. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. This principle says that decision making should be dispersed at various levels of organization. To what extent the centralization is needed, that means concentration of decision making power at top level, and decentralization means delegating the decision making power at various levels of organization. तो कितना concentration centralization और decentralization का रहेगा depends upon the situation existing in that organization. Situation means I am going to see here to what extent my subordinates are capable of taking decisions in various situations in the organization. मेरे superior का कितना experience है, मेरे subordinates की कितनी ability है कि वो हर situation में decision ले सकें. So the principle is applicable in all the time. But to what extent I have to apply that principle, that is I cannot apply it in the identical manner in all the organization. It has to be modified depending upon the situation existing in that organization. लगा रहे हैं but modify करके लगा रहे हैं. Next is mainly behavioral. आप जानते हैं management is the art of getting the people work done through people. तो ये प्रिंसिपल्स क्या कर रहे हैं? दे आर बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर दैट इज बिकॉज ऑल द वर्क इज बीइंग डन बाय ह्यूमन बीइंग्स. बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कर रहा है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक दूसरे की तरफ कमिटेड होकर के काम कर रहे हैं. प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डे कॉर्प्स is developing a feeling of team spirit among the employees working in the organization. It is also improving the relationship between human and material resources, which is important for achieving the organizational goals. That means human behavior में changes ला रही हैं ताकि वो जो भी resources organization में use हो रहे हैं उनको optimum तरीके से use करें और wastage और spoilage कम करें. हर चीज़ अगर ह्यूमन बिहेवियर में चेंज आएगा तो डेफिनेटली जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं वो ऑर्डरली तरीके से प्लेस्ड होंगी और देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ टाइम सर्चिंग फॉर दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. वेरी गुड एग्जांपल आई कैन गिव यू प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर which says that material order and social order must be maintained in the organization, saying that everything should be kept at its proper place so that no time is wasted in searching for those materials. So principles are mainly behavioral in nature. Now let's come to the next point, cause and effect relationship. साइंटिफिक प्रिंसिपल की जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, बट दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैब्लिशिंग एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिकॉज यू नो दैट मैनेजमेंट इज डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर एंड मैनेजमेंट इज डीलिंग विद वेरियस सिचुएशंस which cannot be identical in all the organization. ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशंस वैरी करती हैं, डायनामिक होती हैं, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती. और ह्यूमन का बिहेवियर भी कभी कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसीलिए ये प्रिंसिपल्स भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट स्टैब्लिशिंग एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में भी दैट मैनेजमेंट इज साइंस, but it is an inexact science, not an exact science, it is an inexact science. एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल जो फ्योल ने डेवलप किया है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. It says that presence of one superior
avoids the situation of confusion in the organization. तो यहाँ पर क्या है cause? यूनिटी ऑफ कमांड का क्या कॉज है यहाँ पे? प्रेजेंस ऑफ वन सुपीरियर. और इफेक्ट क्या है? अवॉइडेंस ऑफ कंफ्यूजन अमंग द सबऑर्डिनेट्स. सो इट्स करेक्ट नो? Principles are reflecting cause and effect relationship. And last feature here is contingent. This principle, this point of this feature of principle of management says that application depends upon the condition prevailing in the organization. उस प्रिंसिपल को उस ऑर्गेनाइजेशन में लगाना है नहीं लगाना है, ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है. अब जैसे डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है कि काम का अगर हमने बंटवारा कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में और पर्सन को उसकी एबिलिटी के हिसाब से काम दे दिया तो काम में स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाए. बट दिस प्रिंसिपल इज ऑफ नो यूज. Division of work is of no use in the organization where personal skills are needed to cover up that job. So we understood that application depends upon the condition which is existing in that organization at that particular point of time. So we saw the 7 important features of principles of management. Let's have a quick review. Universal applicability, general guidelines formed by practice and experimentation, flexible, mainly behavioral, cause and effect relationship, and contingent. That's all for today. Thank you. If you have any queries, please comment.